All right, let's begin with the class. Objective hai, inshallah, we are going to continue with the range of quadratic functions and then moving on towards the range of more functions. So firstly, हमने last time quadratic function के range में क्या सीखा था, मैं recall करवा देता हूँ. Linear function हमने सीखा था और बहुत अच्छी तरह functions की basis को cover किया था. We covered the basics of functions. Then we covered the range of linear function. And then we started off with the range of a quadratic function with just one example. We covered just one example. There are more examples to go to reinforce this concept. But just to recall the steps of finding the range of a quadratic function. The first step, find the coordinates of turning point of the curve using completing the square, differentiation, etc. तो हमने कहा था लीनियर फंक्शन में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता, बट क्वाड्रेटिक फंक्शन में टर्निंग पॉइंट होता है. लिहाजा हमें टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे. वी विल हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट, राइट. टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे. The first step, find the coordinates of turning point. Then number 2 step, substitute endpoints of the domain if any, which tells us that there are not always endpoints defined. Why? Because at times the domain is x belongs to real number. So if the domain is x belongs to real number, this means that there are no endpoints. This means that the range will solely be based on the turning point. Minimum maximum value will be used to find the range of a function if the domain is x belongs to real number. तो मैंने कहा था कि if it is a minimum point, why, how is it a minimum point? Because the coefficient of the bracket is positive, it is a happy face curve, it is going to be a minimum point. So this 3 will be a minimum value. This means y cannot take a value lesser than 3. So y will be 3 or more than 3. So y is called fx. So the answer will be fx is greater than equal to 3. fx is greater than equal to 3. और हमने स्केचिंग भी बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि भाई देखें ऊपर से आ रहा है, y ऊपर से आ रहा है, it's decreasing, it reaches a minimum, then it starts to increase again. So before the turning point it was increasing, after the turning point also it was like before the turning point the curve was decreasing, coming from a very high value towards a low value, then turning point, and then again started to rise. This means there is no upper limit. There is no upper limit. So the lower limit is 3 and the range was fx is greater than equal to 3. ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, समझ भी आ गया था, एक्नॉलेज भी कर दिया था आप लोगों ने. Moving on towards the next example, example number 2. fx is equals to negative x plus 1 whole square plus 5 for x belongs to real number. And we are told to find the range of f. मैंने क्या कहा? Whenever the domain of a quadratic function is x belongs to real number, then first of all we need to find the coordinates of turning point, and the range will be based on the minimum maximum value. Minimum maximum value is the value of y coordinate of turning point. So if we are going to find the coordinates of turning point, what will be the coordinates of turning point here? I need your participation please. बताएं क्या आपके coordinates of turning point क्या होंगे? चैट में पार्टिसिपेट करें जल्दी से. Very good. Negative 1, 5. Is it going to be a maximum point or a minimum point? Very good. It is going to be a maximum point because the coefficient of the bracket is negative. It is going to be a maximum point. So maximum point coordinates negative 1, 5. Achha, why do we focus on the x coordinate? Just to check whether this x coordinate lies in the domain or not. Because one of the notes, if the x coordinate is included in the domain, y coordinate will be included in the range. तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या x coordinate domain में शामिल है या नहीं. If the x coordinate is included in the domain, then y coordinate will definitely be included in the range. And because there are no endpoints, this means that over here the range is going to be based on the maximum value. Any idea what will be the range over here? If this is the maximum value,
What will be the range? सब पार्टिसिपेट करें चैट में प्लीज, पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड. Very good. To all those who have been participating, it is less than equals to 5. Perfect. जबरदस्त. कॉन्सेप्ट मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को, सही है. fx is less than equal to 5. क्यों भाई? मैक्स मिनिमम में क्या होता था? मिनिमम या उससे ज्यादा, मिनिमम और मोर देन दैट वैल्यू. सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू. इन केस ऑफ मैक्सिमम, इन केस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या उससे कम. शोर शायद आप लोगों को भी आ रहा होगा, शोर की वजह से मैं चुप हो गया था. तो इन केस ऑफ मिनिमम, एम्बुलेंस का शोर था, एम्बुलेंस वाज गोइंग. मिनिमम और मोर देन दैट, मैक्सिमम और लेस देन दैट. So over here, because it is a maximum value, that is why the range is going to be fx is less than equal to 5. So this is going to be our final answer. So if you are going to visualize, अगर हम इसका ग्राफ बना लें, सही है, अगर हम इसका ग्राफ बना लें, तो -1, 5 will lie somewhere over here, and the shape is going to be like this. It is going to be like this. एक मिनट, मैं कुछ सोच रहा था. 0 पे अगर मैं करता हूँ तो -1 से गुजरेगा, सही है. ऊपर से आके यहाँ से कर्व गुजरेगा, एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. इस तरह का आपका कर्व होगा, सही है. तो अब क्या करना है, ये स्केचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट टू विजुलाइज एट्स व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज एक्चुअली द शेप ऑफ द कर्व. So this is the x-axis. This is the y-axis. Right? x-axis है, y-axis है, maximum value है. Maximum value कितनी है? 5. What is the x-coordinate? It's -1. So we can see that it was from a very low value towards a higher value, reaching a maximum of 5, and then again decreasing. So over here, there is no lower limit, no lower limit. The maximum limit is 5. It cannot go beyond 5. The range is fx less than equal to 5. So what is the conclusion that we have derived? If it is a maximum point, range is going to be, if it is a maximum point and the domain is x belongs to real number, then the range will be fx is less than equals to maximum value. Conclusion, fx less than equals to maximum value. In case of a quadratic function, if the domain is x belongs to real number, if the domain is x belongs to real number and the function is a quadratic function, then the range is going to be fx is less than equals to maximum value. And if we talk about example number 1 that we saw in the last class, if it is x belongs to real number and the function is a quadratic function, then the range is going to be fx is greater than equals to minimum value. If it's a minimum point, the range will be greater than equals to minimum value. If it is a quadratic function, it has a minimum point, the domain is x belongs to real number, the range will be fx is greater than equals to minimum value. If it is a quadratic function, it has a minimum point, it has a maximum point, the domain is x belongs to real number, then the range is fx is less than equals to maximum value. So this is the summary, right? Application के साथ बता दिया. यहाँ तक मुझे acknowledge कर दें. Are we all clear with both these examples that we have covered, that focuses on the domain x belongs to real number only?
All right, great. Moving on towards the third example. If the function is fx equals to x plus 1 square, find the range of f if. Now there are two possible domains given. If part A is the case, and if the domain is 0 till 2, what will be the range? If the domain is -2 till 2, what will be the range? So there are two parts. So let's focus on the first part first. Part A. Let's focus on part A first. So part A says the domain is 0 till 2. What are the steps of finding the range of a quadratic function? मैंने जो आपको steps बताएं, please remember those steps. Step number 1, always find the coordinates of turning point. Whichever method you know, find the coordinates of turning point. Step number 1. Step number 2, substitute endpoints, if any. And suggestion, along with these two steps, suggestion, always draw a sketch to visualize. ये नसीहत अगर मेरी याद रखेंगे ना, इंशाल्लाह कहीं नहीं फंसेंगे. टर्निंग पॉइंट, एंड पॉइंट्स, स्केच. सवाल आपके कदमों में होगा इंशाल्लाह. तो आप सबसे पहले फॉलो करते हैं. What are the coordinates of turning point over here? Coordinates of turning point along with the nature. पूरा बताएं. मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, नेचर के साथ बताएं. शाबाश, जल्दी से, जल्दी किया करें, इतना सोचा नहीं करें, जल्दी. ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब मैं थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए पूछता हूँ आप लोगों को. द मेन पर्पस इज, हमने पूरा क्वाड्रेटिक कर लिया, ये तो हम सबको आता है. असल चीज आप लोगों की टेस्टिंग है, राइट? क्या आप लोग को आ रहा है, नहीं आ रहा, याद है या नहीं? और थोड़ी पार्टिसिपेशन भी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स बट नॉट टेलिंग द नेचर. सही है, ओके. बताएं, सबकी पार्टिसिपेशन. मतलब ऐसा होना चाहिए कि चैट बॉक्स भर जाए फौरन. सोचना क्या है मतलब. Yes, it is a minimum point. Very good. So it is a minimum point. Surely it is a minimum point. And the coordinates are -1, 0. Perfect. Because over here nothing is being added, so it's 0. And x is x plus 1 equals 0, which is -1, right? चलिए, पहला step था find the coordinates of minimum point. अच्छा, minimum point निकाल के ये पता चलता है इसका x भी होता है, इसका y भी होता है. रेंज के लिए we consider this y. This is going to be our minimum value. This will be our minimum value. Right? This will be our minimum value. Okay. Now the second step. First step, find the coordinates of turning point along with its nature. Then substitute endpoints in the given function, if any. So over here we can see that there is endpoint number 1. There is endpoint number 2. One endpoint is called starting point. The other ending point is called the ending point. So the domain has a starting point, an ending point. So with endpoints means दोनों. Endpoints जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब दोनों. सबसे छोटा, सबसे बड़ा. This means we are going to substitute 0 as well as 2. So let's substitute. If you are going to substitute 0, function में 0 डाल दिया, क्या हो गया भाई? 0 डालने पे क्या आया? f से 0 किया तो 0 plus 1 whole square. 0 plus 1 whole square. We are going to get a 1. 1 आ जाएगा जनाब. सही है. अच्छा, if we are going to substitute 2, the second endpoint, then what answer will we get? So we will get 2 plus 1 whole square. This is going to be 3 square 9. Step 1, find the coordinates of turning point. Step 2, substitute endpoints of the domain. दोनों steps हो गए. Now you have to give the domain. Now you have to give the range. Now you have to give the range. अच्छा, रेंज देने के लिए बगैर स्केचिंग की भी हो सकता है. It depends upon how conceptual you are. It depends upon how much practice you have. But a suggestion is that you visualize.
But if without visualizing at the moment, if I'm trying to give the range, how will I give the range? अब जरा इस चीज को समझें. अब जहन में ये आ रहा है सर ये 0 से शुरू होकर 2 पे खत्म हो रहा है. I'm substituting 0, I'm getting 1. I'm substituting 2, I'm getting 9. So if domain is from 0 till 2, the range will be from 1 till 9. Normally the students do like this. They say that the range will be from 1 till 9. But then you have to look. If you are giving the range 1 till 9, this means as per you, the range, as per you, the minimum value is 1 and the maximum value is 9. Whereas when we have found the turning point, we can see that 1 is not the minimum value. 0 is the minimum value. If 0 is the minimum value, the range should have been from 0 till 9. Why from 1 till 9? But then one point that you need to consider as well. If the x coordinate of turning point is included in the domain, the y coordinate of turning point will be included in the range. तो यहां पर अगर हम चीज देखें, is the x coordinate -1 included in this domain? Is it included? Yes or no? No, not included. So in part number 1, this -1 not included in the domain. So the minimum value will not be included in the range. Simple phenomena. X coordinate not included in the domain, y coordinate will not be included in the range. So this means that we would have considered 0 to be our minimum value while giving the range, but as of now, we are not considering it because -1 is not in the domain. So -1 is not included. So 0 is also not included. So our range will only be focused on value 1 and 9. We are going to give our answer. Fx lies between 1 and 9. This will be our final answer. Now, if we look at part number B, the first step, we'll find the minimum point, which is -1, 0. Then we substitute the end point. Step number 2, we substitute -2. So -2 plus 1 is -1, whole square is 1. And if we are going to substitute 2, then 2 plus 1 whole square is 3, 3 square is 9. Substituting -2 gives us 1, substituting 2 gives us 9. Our range will be, अच्छा अब सवाल, will our range be 1 till 9 or will we have to consider this minimum value? To answer this question, we have to check if this domain value, if this x coordinate is included in the domain or not. Is it included in the domain? Yes, very good. This is included in the domain. This will be included. Will be included. So now 0 is one of the values of y. 1 is another value. 9 is another value. But as we are considering 0 as well now, because the x coordinate is included in the domain, therefore considering value 0, 1 and 9, which will be the least value? In part A, because -1 was not included, we excluded 0 as well. That is why we only consider 2 values to find the range. But over here, we are going to consider the third value, that is the minimum value as well. Why? Because the corresponding x is included in the domain. -1 lies between -2 and 2. As -1 is included in the domain,
0 will be included in the range. So our answer will be from 0 till 9. When we are considering 0 as well, now if we consider 0, 1 and 9, all three values, the least will be 0, the greatest will be 9, and range will then be 0 till 9. So the answer will be fx lies between 0 and 9. This is going to be our final answer. Application of that note again. पहले जो application देखी थी वो कैसे देखी थी? If this one is included, then 3 will also be included. That is why we are taking the equals to sign. और यहाँ क्या किया हमने? Similarly, part 2 में भी यही हुआ. -1 was included. So 5 was included with the equals to sign. But in question 3, in example number 3, -1 was completely omitted from the domain. It was not within 0 till 2. So we have excluded 0 completely, and we have only focused on 1 and 9 to give our range. And the range is 1 till 9. But over here, as -1 is included in the domain, so we are going to consider 0 in the range as well. So 0, 1 and 9, the least value is 0 and the greatest value is 9. So our range is 0 till 9. अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा विजुअलाइज भी करवा दूं, विजुअलाइज कर लेते हैं. If I'm going to visualize, how will we, what kind of a curve will we get? We will get a curve like this. We'll get a curve like this. How? Now check it out. Now this is -1. This is -2. This is 0. At 0, it's 1. At 2, it's 9. And at -2 as well, it's 9. -2, 9. Sorry. My bad. Let me resize it. Just check it out now. -2, 1, 0, 1, 0, 1, -2, 1, and -1, 0, and 2, 9. Now check out. If the domain is from -2 till 2, if the domain starts from -2 and ends at 2, then we check out that this entire curve will be valid for part number B. So out of this curve, I don't get how to draw the graph. The graph कैसे draw करते हैं? It's a minimum point. It has a turning point -1, 0. The minimum shape curve looks like this. We studied this in quadratics. We have a turning point. We know the shape of the curve. And then we also know that when we are going to substitute -2, we are going to get a 1. -2, 1, -1, 0 is the minimum point. Then 0, 1 is the y-intercept. So when we are going to substitute 0, it's a 1. When we substitute 2, it's a 9. So 2, 9. So -2, 1, x -2, y is 1. Minimum point -1, 0, 0, 1, 2, 9. We have got 4 points, 1, 2, 3, and 4. So for part number B, this entire curve is applicable. So if we are going to check out the values of y, if x is between -2 and 2, then y is between 0 and 9. The least value the curve is taking is 0 and the greatest value is 9. And if you are going to focus on part number A, the domain is from 0 till 2. जब domain 0 till 2 है,
this means this part will not be included. Our curve will only be focused on this part. अब देख लें, जब डोमेन ही जीरो से स्टार्ट हो रहा है, domain is starting from zero, this part will no longer be applicable. So now we can see that only this part of the curve is valid, and this part starts from 1 and ends at 9. That is why our range is 1 till 9. So if we want to visualize, we can visualize by drawing a curve. Visualize कर सकते हैं curve बनाकर. Yes. Are you people getting it or not? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Even if you are going to visualize using curve, we can do it, right? Acknowledge if everyone is clear with example number 3. Very good. Now you people have told me that you people are very clear with example number 3, right? Because I've explained everything clearly. Now comes example number 4, which you people are going to solve first, and then I will discuss. Solve it, take 5 minutes, solve it, and share your answers of part A, part B, part C, part D, and part E. We have been given a function, and we have been given 5 parts to it. So if the domain is x belongs to real number, what will be the range? If the domain is x greater than 0, what will be the range? If domain is negative 2 till 1, what will be the range? In पांचों parts की range आप लोग निकालें. Find the range of all 5 parts and share your answers with me. You should know the steps of finding the range of a quadratic function by now. I've already told this. Follow the steps. Follow my suggestion of drawing a sketch wherever it's needed, and then give your answers accordingly, right? So here you start. 1, 2, 3, go.
अच्छा जी, आप लोगों ने स्टूडेंट्स हैव ट्राइड, अब मैंने काफ़ी सारा टाइम दे दिया, आई गेस 10 मिनट तो मैंने दे दिए होंगे. विल it be considered that the domain falls in. ओके, सो आई बी एक्सप्लेनिंग. देखिए कुछ बच्चों ने सवाल पूछे हैं चैट पे कि व्हाट विल बी द आंसर. आई बी एक्सप्लेनिंग दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज. और बच्चों ने जो आंसर्स दिए हैं उसमें कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस भी हैं, few differences as well. So let's see what is going to be the final answer. And definitely there are a lot of differences. So I guess the rectifications are required. Okay, so let me one more posting. Let me just, बहुत डिफरेंसेस हैं यहाँ, हर किसी का अपना ही आंसर आ रहा है. चलें, काफी कहीं इक्वल्स टू है, कहीं नहीं है, थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं. सो लेट मी चेक. सही है, मैं आपको करवाता हूँ सॉल्व. ये थोड़ी एक्टिविटी करवाने का पर्पस ये था कि इफ़ यू आर ट्राइंग इंडिपेंडेंटली, so definitely you'll be in a better position to see where are you actually making errors. So let's start from part number A, following the instructions that I've given. Part number A says x belongs to real number. So the first thing that we should note is the minimum point, sorry, maximum point. Why? Because over here -2 is written. This means the point will be a maximum point, and the coordinates will be 2x minus 1 equals 0 is half, comma 4. So this 4 is a maximum value. अब बहुत सारे सबने पार्टिसिपेशंस किए हैं, आंसर्स पोस्ट किए हैं, और सब में डिफरेंसेस हैं. मैं सबके आंसर्स चेक नहीं कर सकता, आप लोगों ने पोस्ट किए हैं वो सही है, लेकिन जस्ट चेकआउट के कहाँ आप लोग एरर कर रहे हैं. सही है, तो आई एम सॉल्विंग इट एंड देन you'll see yourself and correct your mistakes inshallah. So first thing, belongs to real number. So I've already instructed that if domain is x belongs to real number, there are no endpoints. Only step number 1 of finding the range is applicable, and our range will solely be focused on the maximum value. So our answer would be fx is less than equal to 4. So this is our first answer. fx less than equal to 4. fx less than 4 नहीं, fx less than equal to 4. तो मुझे कुछ आंसर्स में some few people have also written fx belongs to real number. That was in linear function. If domain is x belongs to real number, range is fx belongs to real number. But over here it's a quadratic function. A quadratic function can never have range fx belongs to real number. This is a very big conceptual blunder. Even if the domain is x belongs to real number, even then the range will be based on the minimum maximum value. If it's a minimum value, fx is greater than equals to minimum value. If it's a maximum value, fx is less than equal to the maximum value. तो ये हो गया आपका पहला पार्ट. काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था, बहरहाल कुछ मसले थे तो मैंने आपके सामने रख दिए. ओके, फोकसिंग ऑन पार्ट नंबर बी. डोमेन इज x greater than 0. First step is find the turning point. Turning point has already been found. अच्छा, मैंने सबके लिए पहला स्टेप हो चुका है, right? First step was to find the coordinates of turning point. Yes, for a question like A in which the domain is x belongs to a real number, we always look at the value of y. Yes. I mean, and if it's a maximum value, then fx is less than equals to this value. And if it's a minimum value, then fx is greater than equals to this value, because minimum means minimum or more than that. So greater than equals to minimum value, and maximum means maximum or less than that. So less than equals to maximum value. Achha, I was talking part B. Part number, this first step has been done for all the parts. For the second step, we have to substitute the endpoints of domain. So endpoint is 0 over here. So let's substitute 0 inside the function. So when we have substituted 0, 0 डालने पर क्या आंसर आ रहा है? -2 times
0 minus 1 whole square plus 4. Now just check out. Minus 1 whole square is 1. 1 times minus 2 plus 4 is 2. We have got 2. Now the maximum value was 4. But the question is this maximum value applicable or not? Is this maximum value applicable or not? सवाल ये पैदा होता है, क्या ये maximum value applicable है भी या नहीं है? So the question, the answer will be yes, this will be considered. Apart from 2, this 4 will also be considered for giving the range. Why? Because the corresponding x coordinate is half, and half is included in the domain x is greater than 0. So if 1 upon 2 is included in the domain, 4 will be included in the range. अच्छा, अब डोमेन अगर 0 से बढ़ता है तो रेंज जो है वो क्या होगी? एक सवाल हो सकता था कि सर एफ एक्स विल बी लेस देन 2, एक्स ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स लेस देन 2. नहीं, यहाँ भी ये आंसर नहीं है. Why this is not the answer? Because we are going to consider 4 as well. So now 2 is not going to be the maximum value over here. 4 will be considered. So over here again our answer will be fx is less than equal to 4. देखें किसी ने आंसर दिया था या नहीं दिया था? देखें पार्ट बी में सबने गलती की है. पार्ट बी में सबने गलती की है. इसका मतलब स्केचिंग दिखानी पड़ेगी. स्केचिंग दिखानी पड़ेगी. अच्छा, एक और प्रॉब्लम सवाल आ रहा है, सर y लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ तो इक्वल्स टू का साइन नहीं है बेटा. 0 when we substituted 0 we got 2, but range is not based on 2. If range was based on 2, it would have been fx less than 2. Range is based on this maximum value, and look, when we substitute 0 we get 2. 0 is not included in the domain, so 2 will not be included in the range. Even if we were giving the range based on 2, the answer would have been less than 2. We wouldn't have included 2 because 0 wasn't included. But if we talk about half, is half greater than 0? The answer is yes, it is greater than 0. This means 1 upon 2 is fully included in this domain. That is why 4 will be fully included in the range. So that is why we will not only write less than, but we'll write less than equals to 4. Let me draw a sketch to help you visualize this scenario. बगैर sketch के ना अक्सर हम नहीं कर पा रहे होते. So half comma 4 is our coordinates. So let's draw a curve. Let's draw a curve. Half comma 4. Let's suppose if this is a curve, right? This is going to be half and this is going to be 4. Now just check out. When we have substituted 0, अच्छा सॉरी, गलती क्या हो गई कि मैंने मिनिमम बना दिया. सॉरी, माय बैड. यहाँ तो मैक्सिमम बनेगा ना. एक गलती हो गई मुझसे, सॉरी यार. तो यह टर्निंग पॉइंट आएगा, यहां से मुड़ेगा और नीचे आ जाएगा. अब देखिएगा बेटा, half comma 4 is our maximum point, and if it is a 0, let's shift it down, then shift it up. एक मिनट मुझे दें, दोबारा बनाने, बिला वजह की कंफ्यूजन हो गई है. 0 पे we have got a 2, so if we are going to sketch, it's a maximum point. It should pass from 0 comma 2, and the coordinates will be half comma 4, the coordinates of maximum point. Sketching पे भी आपका हाथ साफ होना चाहिए. It will pass from here, will pass from half comma 4
So the sketch is going to be like this. Yes. But this is the right curve. 0, 2, half, 4. Now just check out. If the domain is x belongs to real number, the range is less than equal to 4. If the domain is greater than 0, then this part will not be applicable. This part will not be applicable. हर part के लिए मैं ग्राफ में चेंजिंग करूंगा तो देख लीजिएगा. For part B, this part will not be applicable. मैंने रेड से कट कर दिया. I've cancelled it. So only this is applicable. ये भी कट हो गया. सही है. यहाँ से applicability है. It starts from here and then it goes up and then it comes down and it goes down and down and down. Because x will be greater than 0, x will keep increasing, y will keep on decreasing. X will keep on increasing, y will keep on decreasing. X increases, y decreases. So now check out, when we if the domain is greater than 0, then 0, 2 is the point. But the y value is 2, then it rises to 4, and then it goes down and down and down. So there is no lower limit. There is no lower limit. However, the upper limit is 4. So 0 पर 2 आया था, 0 included नहीं था, तो 2 include नहीं हुआ. 0 include नहीं था, तो 2 include नहीं हुआ. लेकिन 2 की बेसिस पर हम पार्ट बी में रेंज दे ही नहीं रहे. रेंज तो हम 4 की बेसिस पर दे रहे हैं. तो बिकॉज दिस हाफ इज इंक्लूडेड इन द डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाली वैल्यूज, इसमें हाफ इंक्लूडेड है, लिहाजा 4 भी इंक्लूडेड होगा. लिहाजा देखा जाए तो ये वही आंसर बन गया जो पूरे कर्व की केस में बनता ना, वही इस पार्शियल कर्व के केस में रेंज बनेगी. एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू. अब सबकी गलती थी कि उन्होंने लेस देन 2 दिया हुआ था या लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ था, और यहाँ पर आंसर होना था less than equals to 4, same as part A. Yes. Are you clear with part number B? चलें अब मजीद आगे बढ़ते हैं. Part C. Substitute endpoints. So if I'm going to substitute -2, then what I'm going to get? If I'm going to substitute 1, then what I'm going to get? So let's substitute -2. कैलकुलेटर्स का सहारा ले सकते हैं, मसला नहीं है. -2, 2 times -2 is -4. -4 minus 1 -5. -5 whole square is 25. 25 times -2 is -50. -50 plus 4 is -46. So it's -46. If it is a 1, then 2 times 1 minus 1 is 1. 1 square times -2 plus 4. It's a 2. Positive 2. अब देखिएगा, सही है. अब स्केच देखिएगा. मैं 1 मिनट, ये इरेजर भी इतना बड़ा हो गया. 1 मिनट, ये मुझे रेड हटाना था. मैंने ये कैंसिलेशन वाला पार्ट हटा दिया. सही है. अब देखिएगा. Now over here my domain starts from -2. So -2 पे it's -46. समझ लें, ये कर्व अगर नीचे जाता है तो it's -2, -46. नीचे से आ रहा है कर्व. -2, -46. Then domain says -2 till 1. 1 तक जाना पड़ेगा. 1 हाफ के बाद कहीं आता है, यहाँ 1 आएगा. 1 पे बन जाएगा 2. From here till here the curve will be valid now. This part is no longer valid. So based on this part, tell me what is the minimum value. Minimum value is -46. What is the maximum value? The maximum value is 4. अब अगर देखा जाए तो एंड पॉइंट्स में एक वैल्यू -46 से एक 2 है. So we can give answer -46 till 2. But we will not give answer -46 till 2, but we will give answer -46 till 4. Why? Because the x coordinate of turning point is included within the domain -2 till 1. Therefore, the answer of range will not be based on only -46 and 2, but we will also consider 4. Because the x coordinate is included in the domain, the y coordinate will be included in the range. So -46, 2, and 4 are the 3 values of y.
Based on these three values, the minimum value is negative 46 and the maximum value is 4. So the answer will be fx is greater than equals to negative 46 and 46 will be included. Why? Because 2 is included using the equals to sign. So this negative 46 will also be included, and then the maximum value is also being considered, which is 4. The answer will be negative 46 till 4. अब देखिए हालांकि नेगेटिव 46 इन 2 आ रहा है, बट 2 को हमने कंसिडर किया था, लेकिन 2 और 4 में ज्यादा बड़ी वैल्यू 4 थी. So that is why we have chosen 4 as the maximum and negative 46 as the minimum, and the answer is negative 46 till 4. Graphically, I've already told that if negative 2 comma negative 46 is one of the points, then the curve starts from here, it will go on and on and on. It will end here till 1. ये सब कट गया और ये मेरा कर्व हो गया यहाँ तक. If you are going to look at this curve, our least value will be negative 46 and our maximum value will be 4. So the range is negative 46 till 4. बगैर स्केच के भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई आप कर सकते थे, और स्केच के साथ आपको और क्लैरिटी आ जाती है. यस, पार्ट सी इज क्लियर टू एवरीवन. बात समझ आ रही है? मूविंग ऑन टुवर्ड्स पार्ट नंबर डी. The domain is x is greater than half. Now this half is basically the x coordinate of turning point. So based on the graph, this part will now be omitted. So if x is greater than half, y will be lesser than 4. As 1 upon 2, if we substitute 1 upon 2, we get y4. Although x is greater than half, but we are not going to substitute 1, 2 or 3. मैंने कहा था ना, 1 half के बाद 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता. हाफ के बाद 0.5 के बाद 0.500001 भी आता है. तो आप क्या करोगे? You will substitute half only and you will get a 4, because these are the coordinates of maximum point as well. But as half is not included, this half is not included, this 4 will also not be included. So if x is greater than half, y will be less than 4. The answer of part D will be fx less than 4. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट की बहुत टेस्टिंग हो रही है. Every dimension is considered. Most of the I have created this example on my own after a lot of thought process to ensure that multiple requirements are being covered, so that whenever you face a question in the exam of range of a quadratic function, you don't get stuck. I have covered a lot of conceptual things over here. I hope you people are getting it. Are you getting it or not? So part D is fx is less than 4. So if you're going to substitute half, we'll get a 4. So fx less than 4 will be the answer of part D. Then if we talk about part number E, x is less than 0. X is less than 0. Then as per the instruction, substitute the endpoint. If you're going to substitute the endpoint, which is 0, we are going to get, over here also we can substitute the endpoint, but we know that this endpoint is basically the maximum point only. So that is why I have not substituted. Substitute f half, which is going to be the endpoint, and you'll get a 4. And then you'll realize that this 4 is same as this maximum value. So this means x half is also the turning point x coordinate. That is why the range was fx less than 4. Now, if you talk about less than 0, then substitute the endpoint. If we substitute 0, we get a 1. We get a 1. No, sorry, we get a 2. My bad. If we substitute 0, we get a 2. So if I'm going to substitute 0, we'll get a 2. And now if the domain is less than 0, this x is not included. Not included. Ni, not included. Half is not included in the domain.
4 will not be included in the range. As 1 upon 2 is not included in the domain, 4 will not be included in the range. So that, and if we talk about it graphically, then this part will not be considered. This part will not be considered. This will be the only part that is going to be considered. Just check out. If domain is x less than 0, x is less than 0, then at 0, y is 2. 0 is not included. 2 will not be included. X less than 0, y less than 2. Y less than 2. So over here we are saying fx less than 2. Fx less than 2. Part D, fx less than 4. Part E, fx less than 2. But this part is not valid. At 0, y is 2. X less than 0, y is less than 2. 0 is not included with the equals to sign. 2 will not be included as well. So we have written 2, but we have not taken an equals to sign. Fx less than 2 is going to be our final answer. Fx less than 2. And this question, example number 4, is all covered now. Acknowledge if it's clear. Are you people getting it or not? In part D, why have we not written less than equal to 4? Sawal, equal to क्यों नहीं है? Because over here is x greater than half. If x is greater than half, y is less than 4. This half is not included in the domain. There is no equals to sign over here. As there is no equals to sign, if there would have been x is greater than equals to half, we would have written fx less than equals to 4. But ये 4 1/2 पर आ रहा है. 1/2 डोमेन में शामिल नहीं है. ये 1/2 डोमेन में लिखा हुआ तो 1/2 है, बट इक्वल्स टू साइन के साथ नहीं है, शामिल नहीं है. लिहाजा 1/2 सब्स्टिट्यूट करके 4 तो निकालेंगे, बट जैसे हाफ शामिल नहीं है वैसे 4 भी शामिल नहीं है. लिहाजा आंसर fx लेस देन 4 होगा. यस ईसा, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Okay, great. Alhamdulillah, all clear. सही है जनाब, बात समझ आ गई? स्क्रीनशॉट भी ले लें, so that if anything is missed out, you can just check it out later. Moving towards range of a reciprocal function. We have covered range of a linear function. We have fully covered range of a quadratic function. Now moving on towards range of a reciprocal function. The question is reciprocal function? Have we ever covered a reciprocal function? Yes. In O level as well as IGCSE, reciprocal functions was included. But at times what happens is the students, when moving on towards A levels, they tend to forget reciprocal function concept. So the first question is reciprocal function क्या होता है? What is a reciprocal function? What is a reciprocal function? Reciprocal function किसे कहते हैं? पहला सवाल तो ये आ गया. यहाँ पर जवाब, a function with a variable in denominator is known as a reciprocal function. कहते हैं ना 1/3 2/3, if we are going to reciprocate it, it is going to be 3/2. तो fractions को reciprocate करने की बात होती है. Reciprocal means to shift from numerator to denominator or denominator to numerator. But if we talk about a reciprocal function, what is a function? Reciprocal function, a function with a variable in denominator. So fx is equals to x square, variable in the numerator. But if it's fx is equals to 1/x or 1/x square, now the variable is in the denominator. This means it is a reciprocal function. If the denominator is a linear function, there are going to be two asymptotes. Linear function होगा, दो asymptotes होंगी. सवाल, asymptotes क्या होती हैं सर? इससे पहले हमने नहीं पढ़ा कभी asymptotes क्या होती है. As I have told,
This was included in O levels and IGCSE, but I'm not sure whether you have covered that in that much detail or not. I always make sure that I cover every single area of the syllabus in detail. तो मैं अपने O levels IGCSE के बच्चों को भी बहुत डिटेल में ये चीज कवर करवाता हूँ. रेसिप्रोकल फंक्शन का मैं आइडिया देता हूँ प्रॉपर. But if you have not covered, then here it is. I'm going to explain it. Either you have covered it, either you have not covered it, or if you have covered it, you have covered it in a hurry. बस क्वेश्चंस कम होते हैं इसलिए इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता, पास में कम ही आता है, लेकिन आता जरूर है. एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपने पढ़ा हो लेकिन आप भूल गए हो, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. तो अगर हम यहाँ पर बात करें, a function with a variable in the denominator is known as a reciprocal function. If the denominator is a linear function, there are two asymptotes. अगर denominator linear function होगा तो दो asymptotes होंगे. एक asymptote होगा horizontal asymptote, one will be a vertical asymptote. नाउ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है वो हमेशा y को के फॉर्म में होता है. कैसे बताए? हाउ? इफ यू टॉक अबाउट a horizontal line in coordinate geometry, coordinate geometry tells us every horizontal line has the equation of the form y equals to k. तो रिकॉल करें, अगर एक नंबर लाइन, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, अगर मैं ग्रिड बना लूं, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्रिड, ग्रिड बना ली. अब देखिएगा, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, तो द वर्टिकल लाइन has the equation vertical and passes through 1, equation is x equals 1. Horizontal line passes through 2, the equation is y equals to 2. If it seems to be a proper line or not. Yes, so this is proper. So if it passes through 2, we will say y equals 2. So coordinate geometry has taught us that every vertical line is of the form x equals k, where k is a constant. So if the vertical line passes through 1, x equals 1. If the vertical line passes through -3, it's x equals -3. Similarly, every horizontal line has equation of the form y equals to k, where k is a constant. So if the horizontal line passes through y equals, if the horizontal line passes through 2, it's y equals 2. If the horizontal line passes through 3, it's y equals 3. If the horizontal line passes through 5, it's y equals 5. The bottom line, coordinate geometry tells us every horizontal line has equation of the form y equals k. Every vertical line has equation of the form x equals k. तो यहाँ पर दो एसिम्प्टोट्स होती हैं. एसिम्प्टोट्स होती हैं वो लाइंस जिनके बहुत करीब हो जाए कर्व. Asymptotes are line, the curves gets very closer to these lines, but never meet them. But never meet them. तो अगर मैं बात करूं कर्व की, जैसे कर्व बना है इस तरह का, अब रेसिप्रोकल फंक्शन में चार किस्म के शेप यूजुअली हो रहे होते हैं. It's like that. If let's suppose if I'm going to extend this line, now just check out. There are going to be four shapes. जो एक वर्टिकल लाइन होती है, एसिम्प्टोट होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है. तो there are four quadrants: quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. एक कभी भी आप पेज है, जस्ट टेक अ पेज, एक नोटबुक का एक पेज लें, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एंड ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. टेक अ पेज, रफ पेज, draw a vertical line and draw a horizontal line. That page will be divided into four quadrants. Same is the case over here as well. If we draw vertical asymptote and if we draw horizontal asymptote, then there are four quadrants. In the first quadrant, the curve will be like this. In the second quadrant, the curve will be like this. मतलब अगर एसिम्प्टोट्स पता चल जाएं तो ये मैं समझ जाऊंगा कि कर्व जो है तो इस तरह का हो सकता है, मतलब दो इनमें से कोई दो होते हैं. रेसिप्रोकल फंक्शन इज ऑलवेज मेड इन टू पार्ट्स. Just give me a few minutes. I'm trying my best. I'll try my best to clarify the concept. Just don't try to be panic. Just
try to focus on what I am trying to teach. Few concepts take time to grasp. For few concepts, you take time to grasp those concepts, but I'll try my best to deliver at my best. Just give me some time. कुछ conceptual, difficult, technical areas ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है. ये टेक्निकल नहीं है, डिफरेंट है. Normally when we are drawing a curve, straight line बनती है, it is continuous. If we draw a quadratic curve, it's continuous. लगातार बनता है, लगातार बनता है, कंटिन्यूटी में बनता है. बट रेसिप्रोकल फंक्शन जो है कंटिन्यूटी में नहीं बनता, दो हिस्सों में बनता है. और वो भी कब? जब डिनोमिनेटर लीनियर फंक्शन हो. इफ डिनोमिनेटर is a linear function, there are two asymptotes, and if there are two asymptotes, then this means there are two separate parts of the curve. Two separate parts. Curve is made in two separate parts. वो two separate parts ना इन चारों में से कहीं एक दो जगह बनते हैं. ये हो सकता है ये और ये बन जाए. दिस इज पॉसिबल कि ये वाले और ये वाले हो जाए. ये भी पॉसिबल है कि ये वाले हो जाए. अच्छा, वन ऑफ द पार्ट्स विल बी टुवर्ड्स द राइट ऑफ वर्टिकल लाइन and one will be towards the left. Two separate parts. Right hand side of vertical asymptote and left hand side of vertical asymptote. VA means vertical asymptote. ये shortcut मैंने बना लिया है. VA, vertical asymptote. So always remember, the curve of a reciprocal function will be made in two separate parts if the denominator is a linear function. सर बार बार आप एक ही बात कर रहे हैं. इफ द डिनोमिनेटर इज अ लीनियर फंक्शन, बार बार लीनियर फंक्शन की बात करते हैं. तो लीनियर फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? वो फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा. तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स विल दे विल बी टू वर्टिकल एसिम्पटोट्स. देन दे विल बी थ्री सेपरेट पार्ट्स. पहली एसिम्पटोट से पहले, दोनों एसिम्पटोट्स के दरमियान, बड़ी अगली एसिम्पटोट के बाद. बट वो एक डिफरेंट केस है. दैट इज वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर. 1% कोई ऐसा सवाल होगा, और उसमें भी जो है ना वो विजुअलाइज ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही होती, लेकिन पढ़ सकती है. 99% इट्स 90% प्लस इट्स अ लीनियर फंक्शन. तो पहले लीनियर फंक्शन तो समझ आ जाए, फिर हम बात करेंगे ना क्वाड्रेटिक फंक्शन की. तभी लीनियर फंक्शन में समझने के लिए भी बहुत कुछ है, टाइम लगेगा. अगली क्लास में भी हम रेसिप्रोकल फंक्शन को कवर कर रहे होंगे. चीजें बहुत, मैंने कहा ना, फंक्शन वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स. टेक्निकलिटी भी फंक्शन में है, डेप्थ भी बहुत ज्यादा है, और टाइम भी लगता है. आगे आगे बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं. एक्सप्लेनेशन 1 से 2 क्लासेस में हो जाती है. बट फंक्शन क्वाड्रेटिक में भी एक्सप्लेनेशन लंबी थी, फंक्शंस की एक्सप्लेनेशन उससे भी ज्यादा लंबी है. बट बिलीव मी, आगे बहुत सारे एरियाज आएंगे जिसमें फंक्शंस के कुछ पार्ट्स इंक्लूड हो रहे होंगे. तो फंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात होगी, बट फॉर दैट एज वेल वी शुड नो व्हाट द फंक्शंस एक्चुअली आर. सो इफ वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शंस, देन इंशाल्लाह काफी फायदा होगा. तो फंक्शंस शुरू में ही पढ़ाने का पर्पस क्या होता है? सिलेबस का सेकंड टॉपिक है फंक्शंस, हम भी सेकंड टॉपिक के तौर पे इसको कर रहे हैं. एट द एंड, अच्छा ये टेक्निकलिटी के लिहाज से ऐसा है कि काफी टीचर्स ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक को पढ़ाने से भागते हैं. पूरा सिलेबस करवाने के बाद एंड में फंक्शंस करवाते हैं कि यार एंड में देखेंगे. और बाज़ औक़ात एंड में सिलेबस के दौर में कुछ एंड के टॉपिक होते हैं ना, जल्दी जल्दी में निपटा दिए जाते हैं, ऐसा भी होता है. बट आई ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर कि मैं शुरू के टॉपिक्स में इसको शामिल करूँ, क्योंकि सिलेबस में भी तो सेकंड नंबर पर है फंक्शंस. आप कौन होते हो उसको 8वें नंबर 90 नंबर पे करवाने वाले? इससे क्या होगा कि इफ यू हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन starting months only, then inshallah you will get time, you'll have one whole year to revisit the concepts, to reinforce the concepts, to strengthen the concepts. तो फिर इंशाल्लाह आपको फिर मसला नहीं होगा फंक्शंस में जब कैम्ब्रिज का पेपर आपके सामने आएगा. तो बस ये टॉपिक बड़ा है, इत्मीनान से इसकी एक्सप्लेनेशन लेते रहें, रेगुलर रिवीजन करते रहें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा. Okay, so I was saying that if the denominator is a linear function, there will be two asymptotes. One is a vertical, one is a horizontal. And every reciprocal function which has a linear function in denominator has two separate parts. One part is towards the right hand side of the vertical asymptote,
एंड वन पार्ट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये हो सकता है राइट साइड से ये वाला पिक हो, लेफ्ट साइड से ये वाला पिक। ये भी पॉसिबल है, दिस एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये और ये हो, और ये भी मुमकिन है कि ये दोनों हो। ये कंफर्म है कि एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इन चार में से कोई दो होंगे। अच्छा, इन चार में से कोई दो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा और इन दोनों में से कोई एक होगा। सो ऑल टुगेदर दे आर गोइंग टू बी फोर पॉसिबिलिटीज, दिस विद दिस एंड दिस विद दिस। टू पॉसिबिलिटीज हो गई। अच्छा, इसको ले लें इसके साथ और इसको ले लें इसके साथ, तो चार पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा? बेटा अभी मैं पूरा सिखाने वाला हूँ कैसे बनेगा, पता चलेगा। लेकिन अभी मैं एक आइडिया भी आपके सामने रखता हूँ। एसिम्प्टोट की डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी थी, मैं एक दफा पढ़ भी लेता हूँ। एन एसिम्प्टोट ऑफ अ कर्व इज अ लाइन such that the distance between the curve and the line approaches zero as one or both of the x or y coordinates tends to infinity. 5 minutes A2 क्लास भी शुरू है, नोटिफिकेशन दे दिया उसने मुझे। अच्छा, as x increases, देखें ये जो कर्व है, this curve gets very closer to the horizontal asymptote. As the y decreases, this curve gets very close to this asymptote. ये लिखा हुआ है, asymptote of a curve is a line such that the distance between the curve and the line approaches zero. अब देखिए जैसे जैसे x बढ़ रहा है, y कम होते होते asymptote के बिल्कुल करीब हो गया। इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी कम रह गई, बट कभी मीट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा एक कर्व टकरा के एक्स एक्सिस को मिल जाए, एक्स इंटरसेप्ट नहीं आएगा। मतलब खैर अभी तो asymptote ऊपर है, asymptote से मिलेगा ही नहीं कभी ये कर्व। ऐसा नहीं हो सकता दिस कर्व मीट द लाइन y इक्वल्स टू 2। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो as an asymptote is a line such that the distance between the curve and the line approaches zero as one or both of the x or y coordinate tends to infinity. The curves get very close to these lines but never meet them. तो बस ये लाइंस हैं जिनसे कर्व कभी मिल नहीं सकता। मतलब ये कि y इक्वल्स टू 2 अगर एसिम्प्टोट है तो y इक्वल्स टू 2 पे कभी कोई x एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। y2 आप इक्वेशन में डालेंगे ना, मैथ एरर आ जाएगा। Similarly, if x equals to 1 है, x equals to 1 will never exist. If you're going to substitute x equals to 1 to find the value of y, you'll not be able to get a y. This means x equals 1 is never possible. Y equals to 2 is also never possible. So these are the values which are not possible. If you're going to substitute in the equation, we are going to get a math error. होता है ना यूजुअली x डालने पे y आता है, y डालने पर x आता है, बट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की y वैल्यू डालने पर कोई x नहीं आएगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट का x वैल्यू डालने पर कोई y नहीं आएगा, मैथ एरर आएगा। इसलिए वो जो लाइंस है वो क्या है, एसिम्प्टोट्स हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए मैंने चार किस्म के ग्राफ्स आपके सामने रखे हैं, ये चार हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले एक मिसाल, फर्स्ट केस इज, ये चारों केसेस आपके आईजीसीएसई ओ लेवल सिलेबस में से ही उठाए गए हैं। ये वही हैं जो वहां पर भी सिखाए जाते हैं। It's only these two values which are impossible, so we can just learn those. Yes. नहीं 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 नहीं, 1 for x and 2 for y, अरे नहीं नहीं भाई नहीं यार, 1 for x and y 2 for y नहीं कह रहा। नो, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है। It will vary from curve to equation. As per few equations, the asymptote could be y equals 0 and x equals 5. It's possible. Now that will vary from equation to equation. So this is only just to explain that if the vertical asymptote is x equals 1 and the horizontal asymptote is y equals to 2, then these two values will be the values which will not be possible because these are the asymptotes. Now asymptotes will vary. They will not always be fixed. It will vary from equation to equation. Equation बदलेगा तो asymptotes भी बदल जाएंगी। फिर वो जो asymptotes बदलेंगी तो वो वाहिद वैल्यूज होंगी जो कि नहीं ली जा सकेंगी। Apart from that, all will be possible. Those will not be possible. Rest will be possible. I hope I have cleared your points, Safa. Right? Moving forward, you people will get more clarity, inshallah. So the first thing, y equals a over x for a is greater than 0. अब ये कौन सा केस है?
if there is a constant in the numerator and if that constant is positive, so let's suppose, let's take an example 1 upon x, or if we say y equals to 5 upon x, no matter which value a takes, it doesn't matter whether it takes 1, it takes 5, it takes 500. If a is a positive constant, the shape will be like this. अच्छा, अब ये कैसे, ये जरा सुनना है आप लोगों ने, सही है? The even in O levels and IGCSE, this is told that whenever you have to sketch, you have to check the trend. Trend check करना है. अब यहाँ पर अगर आप trend check करें, let's suppose if you are going to substitute, let me draw a table. मैं एक 1 upon x वाला केस ले रहा हूँ. 2 upon x हो या 200 upon x हो, shape पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So if I am taking, let's suppose x and y. If x is 0, y is a math error. This means, okay, now the 4 examples that I am telling you are those in which the asymptotes are x and y axis. X equals to 1, x equals to 2, x equals to -1, ये भी asymptotes होती हैं. Y equals to 1, y equals to 2, y equals to -1, ये भी होती हैं. बट अभी जो मैं सिंपलेस्ट केस O लेवल IGCSE वाला डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अंदर नॉर्मली ये होता है, horizontal asymptote is x axis, the equation is y equals 0, and vertical asymptote is y axis, the equation is x equals 0. तो y equals 0, x equals 0. तो अगर हम यहाँ की बात करें, 0 पे x 0 पे मैथ एरर है. x1 देखते हैं, x1 पे क्या आता है, तो 1 upon 1 is 1. नाउ आई एम इंक्रीजिंग x में बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो y हो जाएगा 0.5. x में कर देता हूँ 5, y हो जाएगा 0.2. तो यहाँ से मुझे पता चलना शुरू हुआ, 0 पे मैथ एरर था. मैथ एरर था, इसका मतलब कर्व 0 पे मिल नहीं सकता था, x 0 पॉसिबल ही नहीं था. अच्छा, अब ये देखें, ये एक इन्फिनिटी है, ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है. एज x टेंड्स टू 0, x 0 से करीब हो जाएगा, y बढ़ना शुरू होगा. कितना बढ़ेगा, लिमिट ही नहीं है. अच्छा, इसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ. कोई एक वैल्यू आप यहाँ की सब्स्टिट्यूट करें, 0 से बहुत करीब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें, 0.001 मिसाल के तौर पे. मेरे ख्याल से ना इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है, ये मैं जल्दी जल्दी में समझा नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है और एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है. तो मेरे ख्याल से इसको यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि अगली क्लास मेरी A2 की है और मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा. जल्दी जल्दी में मजा नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा अभी हैसल में आ जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि A2 के बच्चे इंतजार कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से आई एम गोइंग टू end my class over here with just an introduction of what reciprocal function is, and there are two asymptotes, and then I'm going to explain it further inshallah. इसको मैं अभी यहाँ से मिटा देता हूँ और मैं इसको प्रॉपर आपके सामने इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट क्लास के अंदर रखूंगा, टेबल वगैरह बना के सब बताऊंगा. इंशाल्लाह फिर आपको प्रॉपर समझ आएगा. अभी रेसिप्रोकल फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया, वो काफ़ी है. मजीद इंशाल्लाह मैं इन चारों को, रेसिप्रोकल फंक्शन की जनरल फॉर्म, फिर उसको स्केच कैसे करना है, फिर उसकी रेंज कैसे देनी है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगी. सही है, चलें. तो एक्नॉलेज करें, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, ऑल गुड. रेसिप्रोकल फंक्शन तो अभी आप छोड़ ही दें, वो मैं इंशाल्लाह अच्छी तरह एम्फोसाइज करूंगा. सही है, चलें. With this, inshallah, we are ending our class, and inshallah, I will explain it more detail in the next class. So just revisit and recall whatever has been covered. Dobara recording dekhni hai, check out the recording, revisit the notes, and make sure that you get what I've explained up till now. So see you in the next class. Take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.